हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन ऑल बोर्ड वाईटी चैनल। और आपको जैसा पता है हम वैदिक मैथ की सीरीज चला रहे थे, क्लास नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू रूल that is very helpful for your calculation, that is named as same 10 rule. What is the same 10 rule? And you can solve so many of calculation from this rule. So without wasting a time, चलिए देखिए same 10 rule. Like if you have any question in the formation of AB into AC, so if the unit digit of two numbers is their sum would be 10, अगर उनका सम क्या है बेटा 10 है और आगे की डिजिट सेम है, तो ऑलवेज द आंसर विल बी a मल्टीप्लाई बाई a प्लस 1 एंड b इंटू सी। तो जिनका भी सम, विच एवर नंबर हैव द सम इज 10, फर्स्ट ऑफ ऑल डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज टू नंबर and after that whatever the value is same, just add 1 in it. If here 6 and 6, so we are multiplying 6 plus 1 7 means 6 into 7. Okay, got it? Like this, let me show you one example, then we will practice on. See, this is the same one, but this is not sum. If it is 67, so this is 10, this is same, so answer will be multiply of unit 2 digits, see 3 and 7, that is 21, and again 6 6, so we multiply 6 into 7, that is 42 in the place of this. So you will get the answer of this two multiplication 4221. Let's do it more. See, uses. First question, 84 into 26. See, 10, that is 24. 2, it is wrong written, 8. 8 into 8 है, means 8 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72, 72. 8 into 9, that is 72. Let's move on the more example. See, 67, we already did this. 7 into 3, 21. 6 into 7, 42. Let's move on the more, one more example. See, 1, 2 or 8, 10, this is same. So 6, 8 into 2, that is what? 16. 8 multiply by 9, 8 into 9, that is 72. That is your answer. Let's do the more example so that we are very good in this rule, है ना। अगर रूल में अच्छा बनना है तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, इसलिए मैं थोड़े और क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन, अब बहुत लोगों को बच्चे लगता है कि ये 2 डिजिट में काम करता, नहीं, ये 3 डिजिट में भी काम करता है। देखिए, जैसे ये 12 एंड 12 आर सेम and the sum of these two number is 10. So first of all just multiply 6 into 4. तो 6 और 4 का multiply करेंगे, we will get 24. Now the 12 is same, so we need to multiply 12 into 13. So 12 into 13 means 132. This is your answer. Got it? Let's do more example. See, this is 10, so this is 21. Now we need to multiply 13 by 14 plus 1. 13 by 14. Multiplication of 13 and 14, that is 182. That is 182. If you know, want to know how we multiply 13 into 14, any two consecutive number, 18 into 19, we will talk about this trick also in the further video. So please सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस सीरीज को फॉलो जरूर कर लें अगर अपनी कैलकुलेशन में ट्रिक के साथ साथ आप समय बचाना चाहते हैं तो। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल. सी, 52 into 158. See, this is 10, so this is 16. Now we need to multiply what? 15 into 16. 15 into 16, that is 240. There is a trick. There is a trick that we will discuss later on next video. Don't worry. First of all, just try to understand this same 10 rule. Let's move on the more example. See, this is 19, 19. This is 10. So if we multiply, this is 9. But in every multiplication, we are getting 2-digit number. So whenever we have 1 and 9 in the last,
So after multiplying these two, just try to write 09 because we need to make it 2 digit. So this is 9, so we are writing here 09. Now we need to multiply what? 19 into 20 because 19 is same. So 19 into 20, that is 380. That is your multiplication. You can save a lot of time if you follow this trick. See here, this is 21. Now 29 multiply by 30, that is 870. That's your answer. Let's move. Let's do one more question for practice. See, 15, 15. So 5, 5, 25. And 15 into 16, we did the calculation earlier. See, 15 into 15. So 15 into 16, that is 240. That's your answer. So from here, we can get one more thing. What? Whenever we have, see, this can be written as 155 square. So whenever we need to find the square, the unit digit is 5. So we can use the same 10 rule. Like if we have 85 square, it is ending with 5. So answer will be 5 5s are 25. Now we need to multiply by 8. Multiply by the next number. 8, next number is 9. 8 into 9, that is 72 is your answer. Let's move 105. We need to take the square of 105. So 5 5s are 25. Now just multiply by 10 by the 11. 1 add करोगे 11 हो जाएगा. 11 into 10, 110. This is the square. So from here we can learn this square. Whatever the square you have, if it is ending with the 5, just write it 25 and the rest number just multiply by the successive of that number. You will get the answer. Okay? So एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आया, देखो ये 5 5 है. सो 5 5 25. 3 multiply by 4, 12. Here this is 10, so this is 16. 8 multiply by 9, 72. Just add this 1 3 4 4 8. That's your answer. So आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें. आप मुझे इंस्टा पे इस आईडी के साथ फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स बाय विवेक सर. और आप मेरे डिस्कशन ग्रुप में यानी टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं, बैंकर बाबू 2023. और अगर आप ऑलीबोर्ड पे कुछ परचेज करना चाहते हैं तो कोड यूज कर सकते हैं विवेक. दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन. अगर जो देख रहा है, जिसे पसंद आ रहा है, तो आंसर जरूर करें. और आपके लाइक करने से, आपके आंसर करने से, आपके दोस्तों के साथ शेयर करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा. और ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन को हम एक बेहतर बना पाएंगे, एक बेहतर कहते नहीं स्टेज तक पहुंचा पाएंगे जहां आपके लिए कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से तेज कर सकें. तो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.